नहीं तमर जोटी प्रेसिडेंट रूल लागू होची सरपंच ए ग्राम पंचायत भांगी जाउची कि तो किसी तार इफेक्ट होनी तो तीन टा तमे रिमूव करी दे तीन टा हमर कोन होची ना डेफिनेटली रहिबो काहे कि ना एटा हमर किछि रहउनी और डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेटा भी हमर डिसॉल्व हुएनी तो आंसर कोन हबो ना 1 and 3 हिजबो हमर करेक्ट आंसर ओके तो एइथिरे हमें कोन कोन तमे मने रखिबो जे व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट जो माने इंटरव्यू ग्रुप रे अच्छा तांकर तमर क्लास एक्चुअली होउची राती 10 टा रे ओके सो एटा रैपिड रिवीजन क्लास फॉर दिस ईयर प्रीलिम माने को पई सो जो माने इंटरेस्टेड दे कैन कंटिन्यू द क्लास और दे कैन माने लीव नो इश्यू किंतु एटा इंटरव्यू रा क्लास में इंटरव्यू रा क्लास हमर होची राती 10 टा रे 11 टा ओके तो हमर व्हेन प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होची नहीं कंफ्यूजन है जो पुनी कहबो कि नहीं एटा कोन पढ़ा होची ओके सो व्हेन प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड इन ए स्टेट द प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमें कहिले जे कोनसी पार्टी यदि मेजॉरिटी नाही ताहाले सेडी कोन हबो ना डेफिनेटली हमरो से माने रिजाइन करिवे ओके सो द स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कैरीज द स्टेट administration with help of chief secretary of the state or advisor appointed by the president तो एटा हमरो जो प्रेसिडेंट रूल कितने नंबर आर्टिकल लागे ना 356 रे पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट रूल और स्टेट इमरजेंसी बोली हमें कहउछे फर्दर द प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो सस्पेंड करिवे किंबा डिसॉल्व करिवे ओके तो एटी जो कुआ जाउची डिसॉल्व बोली तो किछि भी करि परिबे डिसॉल्व करि परिबे और सस्पेंड करि परिबे डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली would have meant that all the seat of the legislative assembly would have been vacated and fresh election must be held at later date okay जेतेबेले हमरो the parliament passes the state legislative bill and state budget the president rule does not lead to dissolution of the local body ऊपर हमरा एटा किछि इफेक्ट पड़िबोनी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आउ गोटे क्वेश्चन 2018 रे हमरो एई आकु नै कि पढिथिला if the president of India exercise his power as provided under article 356 of the constitution in a particular state then Sana B Devavrat B Lipsa Purnima Manoranjan Priyanka ओके आंसर होची बी हिजबा हमरा करेक्ट आंसर ओके ओके तो बी हिजबा हमरा करेक्ट आंसर तो जतले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइज्ड by or under the authority of the parliament तो जेतबे हमें कहले ओटे प्रेसिडेंट रूल लागू हेछि तो स्टेट पई के लॉ करिवो पार्लियामेंट लॉ करिवो डायरेक्टली जे तो हमरा प्रेसिडेंट अछंदी प्रेसिडेंट कंट्रोल रे आसी तो ता पई जहां भी डिसीजन हमें कहले बजट हो किबा तार जण कोनोसी बिल पास करिवार हो तो के करिवो तो एटा हमरा सेंटर करिवो माने पार्लियामेंट करिवो ओके मन रखिबा द प्रेसिडेंट एक्वायर द फॉलोइंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर व्हेन प्रेसिडेंट रूल imposed on the state so he can take up the function of the state government and power vested in the governor or any other executive authority of the state he can declare the power of the state legislature are to be exercised by parliament the parliament pura joda state legislature करथला एटा parliament करि परिबो he can take all other necessary steps including suspension of the constitutional provision relating to any body and authority of the state governor on behalf of the president carries all the administration with the help of the chief secretary of the state and advisor appointed by the president okay so parliament passes the state legislature bill and state budget तेणु स्टेट पई हमरा किए ता बिहाफ रु करबो हमरा पार्लियामेंट ता पई बिल और बजट पास कर ओके सो जो हमरा इमरजेंसी प्रोविजन अछि
स्टेट इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी कितने नंबर आर्टिकल 352 ओके को कंडीशन हमरो नेशनल इमरजेंसी लागू है वार हैला एक्सटर्नल एग्रेशन आउ कोन ना आर्म रिबेलियन हमें कहूचे आर्म रिबेलियन ता पूर्व हमर थिला इंटरनल डिस्टरबेंस ओके इंटरनल डिस्टरबेंस ता को अमेंडमेंट एक्ट रे चेंज करके हमें आर्म रिबेलियन कले 44 अमेंडमेंट एक्ट केबे आस्तिला हमें कहथिले 1978 ओके जनता गवर्नमेंट लेड बाय मोरारजी देसाई का समय आस्तिला ओके तो एटा गला नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जीक्यूटिव रो हमरो 6टा क्वेश्चन पडितला हम देखिबा यूनियन और स्टेट एग्जीक्यूटिव रो कौन कौन क्वेश्चन पडितला with reference to the election of the president of India consider the following statement the value of vote of each ml varies from state to state the value of vote of MP of Lok Sabha is more than the value of MP of Rajya Sabha okay both habo na a habo only तो आंसर कौन हम ना ओनली ए हिजबो हमर करेक्ट आंसर ओके ए हिजबो हमर करेक्ट आंसर हम एक्सप्लेनेशन देखिबा तो प्रथमे तो ता पूर्व हमें देखिबा मोर क्वेश्चन हो जे ए प्रेसिडेंट कर जो इलेक्शन हुए हमर इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए इलेक्शन में हमें कहले ओटे इलेक्टोरल कॉलेज अछि इलेक्टोरल कॉलेज रे इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा रहिबे ना रहिबे रहिबे इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा रहिबे ना रहिबे इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पांडिचेरी एंड दिल्ली इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रहिबे ओके नॉमिनेटेड मेंबर कौन सी नॉमिनेटेड मेंबर रहिबे ना नहीं तो इलेक्टोरल कॉलेज रे जो प्रेसिडेंट कर इलेक्शन हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए आउ ए इलेक्शन रे only elected member of the parliament elected member of the state legislative assembly and legislative assembly of the union territory दिल्ली पांडिचेरी एंड जम्मू कश्मीर कौन सी नॉमिनेटेड मेंबर रहिबेनी किंबा हमरो जो काउंसिल कौन सी मेंबर हमरो रहिबेनी तो तापर हमें कहले जो वोट हुए तो वोट है इनडायरेक्टली वोट हुए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल तो एथिरे हमर कहले जे स्टेट रो एमएलए माने देबे जो विधानसभा रो एंड तमरो लोकसभा और राज्यसभा रो एमपी माने देबे तो तांकर वैल्यू केते गोटे वोट रो वैल्यू केते तो केमिति जानिबो ना जो गोटे एमएलए रो केते वैल्यू हमें देखिबा सो एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हमें असेंबली माने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए को कथा कहूचे shall have as many vote as their multiply by 1000 in the quotient obtained by dividing the population of the state तार फार्मूला ताले कौन हला हमरो तो टोटल पॉपुलेशन ओके टोटल पॉपुलेशन of the state by total seats into 1 by 1000 तेणु टोटल पॉपुलेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द असेंबली सो by 1 by 1000 जेहेतु टोटल पॉपुलेशन हमर वेरी करूची स्टेट टू स्टेट तो सेति भाई हमर कोन होची ना तमरो ए जो वैल्यू ऑफ द एमएलए आल्सो वेरी ओके टोटल जेहेतु हमर वेरी करिवो
तो एटा आल्सो हमर कोन ना value of the MLA vote also vary. Every elected member of the either house of the parliament माने लोक सभा हो राज्य सभा हो has such number of vote as obtained by dividing the total number of vote assigned to the member of legislative assembly of the state by total number of elected member of both house of the parliament. तेणु ए केस रे हमर एमपी मानकर कोन फार्मूला हला ना टोटल जो टोटल हमर जति कि हमर टोटल एमएल मानकर वोट हला थ्रू आउट इंडिया रे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सीट लोकसभा राज्यसभा रो मिसिकी सो डिवाइड कले समस्त पे तो सेम पडिला तो लोकसभा रो राज्यसभा तो अधिक नै कि राज्यसभा रो लोकसभा तो अधिक नै तो सेति पे हमर कोन होची ना सेकंड स्टेटमेंट ता रॉन्ग अछि जो वैल्यू ऑफ द एमपी वोट ऑफ लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ राज्यसभा सेति पे हमर एटा रॉन्ग अछि तेणु आमर ओपीएससी भी तुम देखिबो ए प्रेसिडेंट कर इलेक्शन ऊपर डेफिनेटली पचरा जाउछ हमें कहिथिले इंपीचमेंट कथा पढिथिले हमर प्रेसिडेंट कर इंपीचमेंट केमिति हुए ओके एंड सपोज तांकर प्रेसिडेंट कर जो रिमूवल प्रोसेस त को ग्राउंड रे प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाए को केस रे हमर प्रेसिडेंट को रिमूव करा जाए क्राइटेरिया कोन वेरी गुड सना वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके कॉन्स्टिट्यूशन नो वायोलेशन हेले तो केते बेले से कॉन्स्टिट्यूशन नो वायोलेशन करिवे एनी एग्जांपल देई परिबो जोठी प्रेसिडेंट संविधान रो उल्लंघन करे एनी एग्जांपल संविधान रो केते बेले हमर प्रेसिडेंट उल्लंघन केबे करे declare himself PM. Okay. Hemant Mahanand. Okay. Misbehavior, incapacity nahi. Okay. Not abiding the Council of Ministers advice. Very good, Kuldeep. Okay. हमारा होची कोन ना हमें कहिले President always act according to the aid and advice of the Council of Ministers headed by Prime Minister. एटा कोठी लिखा है केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट लिखा है जे प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जहा कहिबे सेटा मानिबे 74 आर्टिकल 74 रे लिखा है ना नै तो एटा संविधान में लिखा है जे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जहा कहिबे प्राइम मिनिस्टर सेटा मानिया पे बाध्य जदी न मानुछंती तो जदी न मानुछंती ताले हमें कोन भाबिबा सेटा ना हम संविधान रो उल्लंघन हला बोली तो जदी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर जो एड एंड एडवाइस दोउछंती सेटा जदी न मानुछंती देन विल called it as the violation of the constitution और तमरो माने इनडायरेक्टली हमें कहूचे गोटे थरा से हमरा रिकंसीडरेशन पे पठै परिबे किंतु रिकंसीडर हे के आसीले तो सेटा मानिया पे से बाध्य तो एड एंड सी जहां भी करंती काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर एड एंड एडवाइस रे हमरा करन तो जदी न हला ताहला हमें कहबा संविधान रो उल्लंघन हला तंको इंपीचमेंट करा दिबो तो तंको बाहर करिया पई हमरा संविधान रे तंको बाहर करिया पई कोन हमर रूल्स एंड रेगुलेशन फर्स्ट सपोज हमें कहबा तंको रिमूव करिया पई इंपीचमेंट प्रोसेस रे को माने भाग नेबे अच्छा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भाग नबन नबनी पार्लियामेंट रो केवल नॉमिनेटेड ना केवल दिजन जाका नेबे ओके एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो नेबेनी दिल्ली पंडिचेरी रो नेबेनी ओके तो मन रखिबा ओनली इलेक्टेड हंतु किबा नॉमिनेटेड मेंबर हुअंतु राज्यसभा और लोकसभा रो ऑल मेंबर हमरा भाग ने तेनु एटा गोटे जो होची हमरो डिफरेंस होची जे दो द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन देयर इलेक्शन प्रोसेस प्रेसिडेंट को इलेक्शन प्रोसेस रे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा भाग नियंतिनी किंतु तांको इंपीचमेंट प्रोसेस रे भाग ने सेकंड पॉइंट होची दो द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट इन देयर इलेक्शन बट दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन देयर रिमूवल प्रोसेस और इंपीचमेंट प्रोसेस
तो दीटा को तुम मन रखिबो कारण आ ऊपर ओपीएससी हो यूपीएससी हो क्वेश्चन सबुडे पडुची ओके सेम क्वेश्चन नंबर 2023 रे भी पडिथिला in respect to election of the president the members nominated to either house of the parliament and legislative assembly are also eligible to include in the electoral college okay second statement higher the number of elective assembly seats higher is the value of the vote of each MLA of that state. The value of the vote of each MLA of Madhya Pradesh is greater than Kerala. The value of vote of each MLA of Puducherry is higher than that of Arunachal Pradesh because the ratio of the total population to the total number of elective seat in the Puducherry is greater as compared to Arunachal Pradesh. The first हमारा ठीक अच्छी ना भूल अच्छी फर्स्ट स्टेटमेंट इलेक्ट्राल कॉलेज से मैंने भाग नहीं तेणु ऑल फोर तो हबन ओके तापरे हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ईच एमएलए तो कौन हम ना जदि नंबर ऑफ सीट बढ़ी गला कारण हम कहले टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ सीट इनटू 1/1000 ना नहीं तो फार्मूला कौन थिला हमरो टोटल पॉपुलेशन एमएलए मानकर वोट टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल नंबर ऑफ सीट्स इलेक्टेड सीट्स इनटू 1/1000 ना नहीं तो जदि एटा बढ़ी जीवो ताले वोट ऑफ जो एमएलए रो वैल्यू रो वोट कोन हबो बढ़ीबो ना कमीबो डिक्रीज हबो तो एटा से कहै हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट एटा लोअर हिजो तो तीनटा एटा भी भूल एटा भी भूल ओके देन ओनली 1 आउट 2 भितरु द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरल तमे कैलकुलेट करिवो तार केते टोटल पॉपुलेशन केते हमर टोटल एमएलए अछंती आर टोटल पॉपुलेशन केते टोटल एमएलए केते अछंती ओके तापरे तमे बाहर करिवो ओके सेकंड लास्ट होची सिमिलरली पुडुचेरी रो अरुणाचल प्रदेश रो केते लोक अछंती तार टोटल केते सीट अछंती पुडुचेरी रो केते अछंती ओके तार तो से अनुसार हमर करिवो तो आंसर आर कोन कैलकुलेट करी के देखि छ केते हमर होची कोडा एमपी रो ग्रेटर देन केरल ओके तो एटा हमर वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच मध्य प्रदेश ग्रेटर देन केरल ठीक अछि देन हमर अरुणाचल प्रदेश पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश रे एटा भी ठीक अछि कि कैलकुलेट करी के देखि छ ओके नहीं पिला कैलकुलेट करी कोछन दीटा ठीक अछि बोली कैलकुलेट करिवो देखिवो ओके ओनली 2 तेनु दीटा ए दीटा का ऑप्शन तमर ठीक अछि एटा भी ठीक अछि एटा कैलकुलेट करी तमे देखिवो ओके तेनु एई क्वेश्चन होची डिफिकल्ट क्वेश्चन हम पॉपुलेशन आउ तार नंबर ऑफ सीट देखिवो ताकू डिवाइड करिवो तापर जेकी तमे आंसर बाहर करी करिवो ओके तो एटा डिफिकल्ट अछि आउडे क्वेश्चन नंबर पढ़ी स्टेट एग्जीक्यूटिव नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग shall be instituted against the governor of the state in any court during his term of office. The salary and allowance of the governor of the state shall not be diminished during his term of office. तो कोटा हमर ठीक अछि ना दीटा का हमर ठीक अछि तो तांकू हमर कोनोसी क्रिमिनल एक्टिविटीज रे अगेंस्ट तांको अगेंस्ट कोनोसी एक्शन नहीं है ओके एंड सेकंड कथा हला तांको सैलरी अलाउंस shall not diminish during his term of office. अच्छा गवर्नर जो हमें कहले जणे गवर्नर दीटा स्टेट रो गवर्नर हे परिबे ना हे परिबे केते नंबर अमेंडमेंट एक्ट रे हेतला
कितना नंबर अमेंडमेंट 7th अमेंडमेंट एक्ट मन रखिबो 7th अमेंडमेंट एक्ट ओके रे हमरा जणे गवर्नर ही कैन बिकम द गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट ओके सैलरी ताले कोड केते जो दीटा जगह रु मिलिबो ना भाग करा जिवो दीटा का स्टेट रु सेपरेट मिलिबो ना भाग करा जिवो ओके शेयर करा जिवो डिवाइड करा जिवो ओके So in the context of India, which one of the following is the characteristics appropriate for bureaucracy? तो जो मैंने आईएएस ओडिशा से तमरा मेन काम कोन ब्यूरोक्रेसी रे तमे आसु तमरा मेन काम कोन पॉलिसी जो हमर गवर्नमेंट पॉलिसी आसीबो ताको इंप्लीमेंट करिवार दायित्व होची ब्यूरोक्रेसी रो तो सेति पे हमें कहूचे तार मेन काम हला एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी ओके सो डी होचे हमर करेक्ट आंसर The other equation रे क्वेश्चन पडितला with reference to the union government consider the following statement N Gopal Swami Iyengar committee suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it 1970 re department of personnel was constituted on recommendation of administrative reform commission and this was placed under prime minister's charge हाँ हम तो एटा हमरो बी हिजबो ओनली आंसर मन रखिबा तुमको ए कमिटी रा रिकमेंडेशन गुडा को मन रखिया पड़िबो फर्स्ट स्टेटमेंट हमरो रॉन्ग अछि फर्स्ट जो हमें कहले एल गोपाल स्वामी आयंगर कमिटी तो एटा एक्चुअली फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी सजेस्ट करथिले ओके ए नॉट एआरसी रिपोर्ट 1 जो हमें कहउछि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी रिपोर्ट 1 तो फर्स्ट एटा हमर जो करितला एआरसी रिपोर्ट 1 करथिला ओके administrative reform committee one suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it तो सेति पय हमर जो एन गोपाल स्वामी आयंगर एटा रॉन्ग अछि सेकंड स्टेटमेंट हमर ठीक अछि द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड recommendation of the administrative reform commission 1966 and this was placed under the charge of cabinet secretary 1985 it was placed overall charge of the prime minister assisted by minister of state and cabinet secretary okay तो सेति पई सेकंड स्टेटमेंट हमर ठीक अछि फर्स्ट स्टेटमेंट हमर एआरसी रिपोर्ट ऊपर में पॉलिसी कौन हबो The Constitution of India clarifies the minister into 4 ranks: cabinet minister, minister of the state with independent charge, minister of the state, deputy minister. The total number of ministers in the union government, including prime minister, shall not exceed 15% of the total strength of the member of Lok Sabha. Second statement ठीक है ना भूल थे सेकंड स्टेटमेंट ठीक अछि सेटा मैं कहले 91st अमेंडमेंट एक्ट रे आसीथिला जोते कहले कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोक सभा हमर कैबिनेट मिनिस्टर अछन ना नै मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज अछन ना नै
मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर तो हमरो मिनिस्टर ऑफ द हमें कहले कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ द स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ द स्टेट एक्चुअली हमर केतेटा अछंती तीनटा हमर अछंती ओके चारिटा नहीं तीनटा हमर सो प्रथम स्टेटमेंट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज a constitutional body article 74 कहूची so there shall be a council of minister with prime minister at its head and advise the president who shall exercise his function जे हमरा president तांकर action नियंती according to the council of minister headed by prime minister जहा aid and advice देबे सेटा से मानिया पे बाध्य तो एटा में कहिले the central council of minister जो रहिला सेटा गोटे 3 टायर बॉडी कैबिनेट मिनिस्टर रहिबे मिनिस्टर ऑफ द स्टेट रहिबे एंड डेप्यूटी मिनिस्टर रहिबे सो जो मिनिस्टर ऑफ द स्टेट माने दे विल गिव इंडिपेंडेंट चार्ज तारा पेट्रोलियम मिनिस्टर तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम तो तांको गोटे इंडिपेंडेंट चार्ज दिया छी इज नॉट ए कैबिनेट मिनिस्टर ओके तो हमरा होची मिनिस्टर ऑफ द स्टेट जहां को इंडिपेंडेंट चार्ज हमरा दिया जाय छी एंड डेप्यूटी मिनिस्टर की रहंती धरा फाइनेंस मिनिस्टर रहले तो फाइनेंस करो जने डेप्यूटी रहउछ ओके तो होम मिनिस्टर रहिले होम मिनिस्टर कर जने डेप्यूटी रहउछ ओके तो तांको हेल्प करिया पई तांको मिनिस्ट्री संगे आउ जने मिनिस्टर असिस्ट करिया पई जने हमर रहउछंती तो तीन जन कैबिनेट मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट और डेप्यूटी मिनिस्टर सो बेस्ड ऑन द पार्लियामेंटरी कन्वेंशन और 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 रे कोआ जिवो जे मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर केते रहबा दरकार ना 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा माने रखिबा लोकसभा रा 15% देवव्रत डी लिप्सा डी साना डी सुचिस्मिता नीता सुवलक्ष्मी अकस्मिता समस्त आंसर डी ओके तो फर्स्ट Attorney General of India and Solicitor General of India are only officer of the government who are allowed to participate in the meeting of the parliament. तो इथिरे रमण अछि Attorney General हमरा participate करि परिबे only AG हमरा participate करि परिबे he can speak in the Lok Sabha take part in the discussion debate कोनोसी कमिटी रो भी मेंबर हे परिबे but without voting right तंगर अछि ना नहीं so without voting right आउ सब हमर प्रिविलेज गुडा का हमर अछि ओके किंतु सॉलिसिटर जनरल करो से हमर प्रिविलेज हमर दिया जाय ओके so Attorney General resign when the government of which appoints him resign तो जनरली रेजिग्नेशन देले से कहा को देबे प्रेसिडेंट देबे and तमे जानि छ जे he hold the office during the pleasure of the president जेतले चाहिबे तांको कोन करि परिबे रिमूव करि परिबे ओके and Attorney General केत नंबर आर्टिकल Attorney General 76 Attorney General आउ हमर हला एडवोकेट जनरल एटा हमर सेंटर पई हमें कहले यूनियन पई हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री हमें कहूचे एजी को हमें हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट कहूचे ओके तो अंकर आर्टिकल हला 76 एटा कितना नंबर आर्टिकल 165 होचे एडवोकेट जनरल तो अटॉर्नी जनरल जने हबा पई हले ही शुड बी क्वालिफाइड टू ए जज ऑफ कोर्ट ही हमरा जज रे क्वालिफाइड हबा दरकार सुप्रीम कोर्ट रा जज हबा पई क्वालिफाइड हबा दरकार एठी हाई कोर्ट रा जज हबा पई हमें खाली डिस्कशन करथिले सुप्रीम कोर्ट रा जज हबा पई कोन हमर दरकार इंडियन सिटीजन ही थिबे 5 वर्ष हाई कोर्ट रा जज किंबा 10 इयर्स एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट ही थिबे आउ कोन एमिनेंट जूरिस्ट ही थिबे प्रेसिडेंट को नजर एमिनेंट जूरिस्ट ही थिबे हाई कोर्ट रा तमे
जज हवा पई कोन दरकार इंडियन हेथिबो 10 वर्ष एडवोकेट हिसाब रे काम करिथिबो हाई कोर्ट रे किंबा आउ कोन कहिथिले 10 इयर्स जुडिशियल ऑफिस होल्ड करथिबो तांको अपॉइंटमेंट किए दियंती प्रेसिडेंट तांको किए देबे गवर्नर सॉरी गवर्नर आंको देबे ओके तो सिमिलरली ये हमर कोन करबे विदाउट वोटिंग राइट ऑल प्रिविलेज एक्सेप्ट ऑल प्रिविलेज रहिबो एक्सेप्ट वोटिंग राइट similarly jane advocate general he can speak up in the state legislative assembly ti कहि परिबे पार्टिसिपेट करि परिबे डिस्कशन डिबेट रे किंतु तांकर वोटिंग राइट हमर रहिबो ओके तांकर मेन काम कोन हला ना जेते बेले हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोठी रिप्रेजेंट करिवार अछि हाई कोर्ट रे कोन से हाई कोर्ट रे हो कि सुप्रीम कोर्ट रे ही विल रिप्रेजेंट जदि एडवाइजर जुरिडिक्शन ऑफ द जो सुप्रीम कोर्ट जतले हमर प्रेसिडेंट कोन से एडवाइस मागबे तो तांका तरफ रु का प्रेसिडेंट का तरफ रु की एडवाइस नै कि माने एप्लीकेशन पकेया पय तो ई सब बुडा का ओके तेनु एटा तमे मने रखिबो आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोडा हमर अटॉर्नी जनरल कथा कहआ जाउची Office of Attorney General is the highest law officer of the country. Solicitor General assist the Attorney General. से तंकर तंकु official काम रे assist करिया पई थांती and the performance is official duty. Attorney General has the right to audience. कोनोसी Attorney General हमो इंडिया रा जे कोनोसी कोर्ट रे जाय के ठिया है कि participate करि परिबे. Can be right of audience in all the court in the territory of India. Further, he has a right to speak and take part in the proceeding of the both house of the parliament lok sabha rajya sabha re si jai ki city participate kari paribe discussion debate re or joint sitting or any other committee of the parliament ro okay participate kari paribe which he may be named as a member but without eta mon rakhiya parikha re padithila IAS ro prelim re UPSC ro tankara voting right amon without voting right so he enjoy the privilege and immunities that are available to the member of parliament okay तो member of parliament को जहा privilege या immunities अछि अंकु भी अछि किंतु member of parliament vote देई परिबे ये vote देई परिबे and solicitor general is not allowed to participate in the meeting of the parliament second how is the term of AG is not fixed by the constitution the constitution does not contain the procedure and the ground for his removal he hold the office during the pleasure of the president जेतबेले चाहिबे सेतबेले तांको रिमूव करि परिबे वर्तमान हमरा की अछंदी एजी आर वेंकट रमन आउ हमरा एडवोकेट जनरल की अछंदी फैक्चुअल क्वेश्चन यदि पडिला अशोक परिजा की अछंदी एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा देखिबा चेक करिबा के अशोक परिजा देखो तमरो when eliminate करी जीवा okay when a bill is presented to the president of India the constitution prescribe the time limit जेतोले बिल ते जाय president का पाखो को president करा different power अछि में कहले either से approval दे दे bill become acts
किंबा विथहोल्ड करके रखी देबे अनलिमिटेड टाइम पर्यंत सेटा सेठी एंड हे गला और सी हमरो इफ नॉट ए मनी बिल तो और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो से कोन रिटर्न करि परिबे रिकंसिडरेशन पे रिटर्न करि परिबे किंतु रिटर्न बिल जदी अगेन तांग पाखु आसिला तो सेटा अप्रूवल करिया पे से बाध्य ना बाध्य न से सेटा अप्रूवल करिया पे बाध्य ओके किछि टाइम लिमिट अछि कि केते दिन भीतर से अप्रूवल करिया पे किछि कॉन्स्टिट्यूशन कोडी लिखा अछि नो तो एटा हमरो लेखा नै जेहेतु तो एटा हमरो डेफिनेटली भूल अछि जे कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब द टाइम लिमिट नो कॉन्स्टिट्यूशन कोडी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है नै ओके सेकंड कथा ला इलेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन बी पोस्टपोन ऑन द ग्राउंड ऑफ सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व एंड इलेक्शन आर येट टू बी टेक प्लेस तो जते बेले हमर लास्ट टाइम इलेक्शन होतिला तते जम्मू एंड कश्मीर रो लेजिस्लेटिव असेंबली नथिला ता बोली जम्मू एंड कश्मीर नाही बोली कोन हमर प्रेसिडेंट इलेक्शन हबनी की बस इवन इफ गोटे दीटा लेजिस्लेटिव असेंबली हमर डिसॉल्व हे जाईची बर्तन सपोज प्रेसिडेंट रूल को गवर्नमेंट नाही तांकर मेजॉरिटी थिला भांगी गला तो डिसॉल्व हे गला तो ता बोली हमर प्रेसिडेंट इलेक्शन बंद हे जिवो की पोस्टपोन हे जिवो की नो ओके तो हमर ऑल 3 हबनी किंबा ओनली 2 हबनी तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखो इफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज declared void by the Supreme Court, all the act done by him or in his performance duty of office before the date of decision become invalid. No. तेणु जहाँ भी डिसीजन से आगुर नहीं जाई छंती तो सेगुडा का हमरो इनवैलिड हबो ना एठी इनवैलिड हबो बोली कहउची तो इनवैलिड हबो ना तो सब गुडा का हमरो रॉन्ग अछि तो फर्स्ट स्टेटमेंट रे कोन ना आर्टिकल 71 ए कोन कहउची if the election of a person as president or vice president is declared void by the Supreme Court यदि Supreme Court तांको election void declare हमर cancel कर दोची the act done by him in exercise and performance of the power and duty of the office of the president and vice president as in case may be before the date of the decision of the Supreme Court shall not invalid तो सेटा हमर इनवैलिड हबो ना तो धर जन को आज हमरा डिस्क्वालीफाई कर दिया गला और कैंसिल कर दिया गला ता बोली ता पूर्व जो डिसीजन गुडा निया आइची तो तार किछि कैंसिलेशन हबो ना ओके तो एडा हमरा केते नंबर आर्टिकल आर्टिकल 71 सब क्लास 2 रे लिखा आइची 71 सब क्लास 4 रे कोन लिखा आइची द इलेक्शन ऑफ ए पर्सन और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ एनी वैकेंसी जे जदी कोनोसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रो वैकेंसी माने वर्तमान हम डिसॉल्व हे जाय छै किबा सपोज हमें कहबो बे राज्यसभा रे 543 जन नाहंती सेतु जदी 4-5 जनकर डेथ हे जाय छै त माने कहबो से आउ थरे जने इलेक्ट हे के आसला परे पूरा फुल हमरा सीट रहिला पर इलेक्शन हो सेमते तेनु कोनोसी जो वैकेंसी रही छी त जेति की वर्तमान अछन तांकु नै की हबो ओके तो सेति पई कह जाउ छी जे हमरा इलेक्शन को पोस्टपोन करा जिवो नाही थर्ड कथा होची as regarded the Indian president the constitution does not prescribe any time limit हमर कोनसी टाइम लिमिट नाही सेति पई तांको जे विथहोल्ड आमे कहूचे तांकर अनलिमिटेड टाइम पर्यंत होल्ड करी किसी रखि पई सेटा तांकर हमें कहूचे वीटो पावर ना वीटो रे गोटे हमर पावर अछि तो एटा होचे हमर कोन ना तीनटा को कोडा भी हमर हेतले एटा भी तो एटा हमें करी थिले ना एबे ओके तो ओनली 2 कथा कहि ओनली 1 हो यार करेक्ट आंसर ओके हमें 2 नहीं आर आंसर होचे ओनली 1 ओके जो कैलकुलेशन हेतला कोन ना फर्स्ट स्टेटमेंट तुम जानछ इलेक्टेड एथरे जो हमें कहले फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग अछि जे नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द इथे पार्टिसिपेट करंती नो नो नॉमिनेटेड मेंबर ओनली इलेक्टेड मेंबर माने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लोकसभा राज्यसभा फर्स्ट हमरो रॉन्ग अछि सेकंड भी रॉन्ग अछि कारण जदी नंबर ऑफ सीट बढ़िबो वैल्यू ऑफ एमएलए हमरो कमिबो सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि हमें कहले सेकंड स्टेटमेंट भी नॉट करेक्ट कारण एथरे जदी हला हमरो वैल्यूटा लोअर वैल्यू थर्ड स्टेटमेंट रे से कैलकुलेट जो हेछि
the constitution जोटा कि 84 amendment act 2001 ने provide that until the relevant population figure for the first census to be taken after 2026 have been published. The population of the state for purpose of calculation the value of the vote of the presidential election shall be mean the population. तो हमर एबे जो कैलकुलेशन निया होची जो टोटल पॉपुलेशन को सेंसस अनुसार निया जाय 19 हमर 71 सेंसस अनुसार दिया होची तो एबा फार्मूला रे मध्य प्रदेश रे रहउची 131 टा केरल रे रहउची केते 152 टा तनु हमर होची थर्ड स्टेटमेंट जदी देखिबो तो आमी कहिचे मध्य प्रदेश रो मोर देन हमर केरल थिला किंतु पॉपुलेशन देली पॉपुलेशन रे माने कहउछन जे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग अछि तो ए जो थर्ड स्टेटमेंट हमर थिला जे मध्य प्रदेश रे ग्रेटर देन केरल माने कहउछन केरल रे ग्रेटर देन मध्य कैलकुलेशन ओके मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन केरल नो केरल इज ग्रेटर देन मध्य प्रदेश ओके सिमिलरली अरुणाचल प्रदेश आउ पुडुचेरी भितरे तो ये स्टेटमेंट ठीक अच्छे लास्ट स्टेटमेंट ठीक है सेति भाई फोर्थ स्टेटमेंट हमरा ठीक अछि तो कैलकुलेशन एटा तने देखियो ओके तापर हमर स्टेट लेजिस्लेटिव रो हमें देखिबा ओके कौन होगा आंसर आ रहा देखो हमर स्पीकर केमिति बच्चा जाए हमें कहले जो माने इलेक्टेड है कि जाई थांदी तांकरी भितरु जण को हमर स्पीकर हिसाब रे डिसाइड करा जाए तो हमर स्पीकर कर सपोज हमें कहबा विधान सभा रो जो स्पीकर तांकर डेट ऑफ इलेक्शन के डिसाइड करो सेंटर रे जेंति प्रेसिडेंट हमर डिसाइड करंदी को दिन स्पीकर कर इलेक्शन हबो तो स्टेट रे सेमिति हमर गवर्नर करिवे ओके किंतु ता पूर्वरु भी हमें कहले स्पीकर पोर्ट्रेन जने रहिबे जे कि सबु प्रथम प्रोसीजर होची जे समस्त आगो असेंबली भितर के एंटर करिवे तो हमर शपथ पाठ करिवे फर्स्ट तो शपथ पाठ करिया पे हमें कहले कहा को आसो हमें कहा को हमर चूज करा जाए ना स्पीकर पोर्ट्रेन को चूज करा जाए गवर्नर ही हमर स्पीकर पोर्ट्रेन को चूज करंती हमर इथर आरपी स्वाई थिले रणेंद्र प्रताप स्वाई थिले एंड तमरो जानिछ जे जो हमर कहले जे जणे स्पीकर पोर्ट्रेन समस्तंकर ओथ सेरेमनी करि सल्ला परे गोटे डेट हमर डिसाइड करा जाए ओडिसा रे गवर्नर हमर डिसाइड करिवे तो तापरे हमर इलेक्शन हो इलेक्शन रे जे जितिबो से हमर स्पीकर हेबो तो बर्तमान स्पीकर ओडिसा रे के अछंती ये ओके सुरमा पाडी ना को कॉन्स्टिट्यूएंसी रो हां रानपुर ओके तो हमें कहले जे तेनु सी जदी हमरो असेंबली रो मेंबर नहति ताले स्पीकर हेई परिबे नाही तो ये कहले जे द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली ठीक अछि द व्हेनेवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व द स्पीकर शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली हमरो इमीडिएटली से हमरो वैकेट करंती नाही हमें कहले जे लाइफ ऑफ द लोकसभा जो पर्यंत अच्छी आउ जने नेक्स्ट जो पर्यंत जने इलेक्टेड न हेई छंदी से पर्यंत से ऑफिस रे रहिबे तो सेकंड स्टेटमेंट हमरो रॉन्ग अछि तो यूजुअली कोन हमरो स्पीकर केस में मन रखिबो यूजुअली द स्पीकर रिमेन्स इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द ओके सो हाउएवर ही कैन वैकेट हिज ऑफिस इफ ही सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द असेंबली जदी असेंबली रा मेंबरशिप पळेला ताले से हमर छाडी देबे सेकंड कथा जदि से रिजाइनेशन देबे रेजिग्नेशन लेटर काहा को देबे डेप्यूटी स्पीकर को रेजिग्नेशन देबे जदि तांको रिमूव करिवार अछि ओके गोटे रेजोल्यूशन हमरो पास करा जिवो हमरो लोकसभा रे सॉरी लोकसभा को जी हमरो विधान सभा रे 14 डेज रो एडवांस नोटिस दिया जिवो जो रेजोल्यूशन ता हमरो पास करा जाय विधान सभा रे एटा सिंपल मेजॉरिटी रे ना स्पेशल मेजॉरिटी पास की तो से जो हमें कहै जेति कि हमरो मेंबर अछंती तो तार
हमरो माने अधारु अधिक +2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड भोटिंग। तो एटा हमर कोन मने रखिबो कारण एई क्वेश्चन टा 2024 रे भी पडिथिला। 2024 रे भी हमर ए क्वेश्चन टा हमें पडिथिला। हम पचारबी तुमको क्वेश्चन टा तेनु एटा इफ इज रिमूव्ड जदि तांको रिमूव करिया को ओडे रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑल द मेंबर ऑफ द असेंबली सो सच रेजोल्यूशन कैन बी मूव्ड ओनली आफ्टर गिविंग 14 days एडवांस। तो हमको जेतेबेले हमें कहूचे स्पीकर को जेतेबेले बाहर करा जाए तो सेतेबेले आज ए स्पीकर हिसाब रे जेतेबेले तांको रेजोल्यूशन चाली छि बर्तन तांको नारे एलिगेशन अछि बर्तन नोटिस हमर 14 दिन नोटिस दिया गला और डिस्कशन डिबेट चाली छि तांको बाहर नहीं तो सेतेबेले से प्रिसाइड करि परिबे ने करि परिबे प्रिसाइड करि परिबे ओके तो सेतेबेले से वोट दे परिबे ना दे परिबे फास्ट इंस्टेंस रे वोट दे परिबे कास्टिंग वोट दे परिबे हमें कास्टिंग वोट कोन कहिथिले जे स्पीकर कर ओटे पावर जोटा कि जेतेबेले कोनोसी बिल को नै कि जदी हमरो टाई हे गला ता फॉर जति के अगेंस्ट सेति कि से केस रे हमरो स्पीकर जोडे वोट दियंती तो सेही डायरेक्शन में हमरो डिसीजन दा जीवो टू ब्रेक द डेडलॉक सी जो वोट दियंती हमें कास्टिंग वोट बोली हमें कहू। ओके तो एटा एथरा पडिथिला जेतेबेले तांकर रिमूवल प्रोसेस चाली छि कंसीडरेशन में अछि सेतेबेले he cannot presided the house और सेतेबेले आज ऑर्डिनरी मेंबर जहा तांकर डिस्कशन डिबेट रे भाग नै परिबे कहि परिबे वोटिंग राइट अछि आज फर्स्ट इंस्टेंस तो स्पीकर हिसाब रे तांकर कास्टिंग वोट रो पावर नै। ओके आ रेजिग्नेशन देले डेप्यूटी स्पीकर को देबे आ तांको रिमूव करिया केले हमर मेंबर ऑफ असेंबली रो जदी तांकर मेंबरशिप चालू पळैबो ताले तो आर्टिकल आउट हमर कोन आर्टिकल 179 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provide that whenever assembly is dissolved the speaker shall not vacate his office until immediately before the first meeting of the assembly after dissolution। तो dissolution परे आउ गोटे assembly जो पर्यंत न आसीची फर्स्ट मीटिंग न होई से पर्यंत से ऑफिस रे। ओके तो सेति पई हमर सेकंड स्टेटमेंट था रॉन्ग अछि। ओके तापरे हमरो तांकर पावर को नेकी तमरो एथरो जेहेतु इलेक्शन हे छि स्पीकर कर पावर को नेकी त मने रखिबो तो स्पीकर हमें कहले जे मेंटेन द डिकोरम ऑफ द हाउस एंड आल्सो सस्पेंड और adjourn द हाउस इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कोरम। कोरम माने हमें कोन कहितले जे मिनिमम नंबर केते दरकार टू कंडक्ट द मीटिंग तो मिनिमम नंबर केते दरकार 1/10 of the total strength of the house तो ओडिसा रे मीटिंग होवा पे केते दरकार 15 जन मिनिमम दरकार। ओके सेंटर रे सिमिलरली हमें कहले जे 55 हमरा मेंबर दरकार सेंटर रे तो मिनिमम नंबर जदी नाही कोरम ऑफ द हाउस जदी मेंटेन नाही ताले अर्जेंट और हमरा सेटा को सस्पेंड करि परिबे कास्टिंग वोट करि परिबे इन केस ऑफ टाई तापरे गोटे बिल टा मनी बिल ना नाही के सर्टिफाइड करंती तो एटा कोनसी कोर्ट रे हमर सपोज हमर आधार को मनी बिल करके पास कर। ओके बहुत क्रिटिसाइज करा गला जे आधार को कहीं मनी बिल करके पास करा गला ये कहले जे आधार थ्रू रे हमें ऑल द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पैसा ट्रांसफर करा जाउची आधार थ्रू रे तेनु आधार जेहेतु पैसा को लिंक अछि से इट इज ए मनी बिल तो आधार के मनी बिल करके पास करा गला सो वेदर इट कैन बी क्वेश्चन एनी कोर्ट और नॉट सो यू कैन नॉट क्वेश्चन। ओके सेकंड कथा होची जे जते हमें कहले जॉइंट सिटिंग हुए जॉइंट सिटिंग टा कितने नंबर आर्टिकल अछि केते 108 रे अछि के डाकंदी जॉइंट सिटिंग को प्रेसिडेंट डाकिबे प्रेसिडेंट डाकिले जॉइंट सिटिंग को के प्रिसाइड करंती सो स्पीकर हमरो प्रिसाइड करिवे। अच्छा ये जो जॉइंट सिटिंग हमर रहिला जॉइंट सिटिंग का हमर मनी बिल केस रे जॉइंट सिटिंग हे परिबो ना नहीं मनी बिल केस रे हे परिबोनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस रे हे परिबो ना हे परिबो। ओके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल केस रे एटा ईच हाउस रे स्पेशल मेजॉरिटी पास हो डेडलॉक हबार चांस ही नहीं तार मैंडेटरी क्राइटेरिया होची जे
दीटा हाउस हमर पास करबा निहाती दरकार आउ स्पेशल मेजॉरिटी सेथि पई ओनली हमर परीक्षा रे पड़ितला मन रखिबो ओनली ऑर्डिनरी बिल केस रे हमर जॉइंट सिटिंग ता हे पारे मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल केस रे हमर एटा हबनी ओके सो हमर जो पब्लिक अकाउंट कमिटी अछि ता चेयरमैन को की अपॉइंटमेंट दियंती एस्टिमेटेड कमिटी ओके तो एस्टिमेटेड कमिटी रा हेड को ही हिमसेल्फ को कमिटी रा चेयरमैन बिजनेस एडवाइजरी कमिटी आउ को कमिटी रो गोटे ही मने अछि समस्त कर पार्लियामेंटरी अफेयर ओके तो जते बेले हमर सबु धर स्टेट रो सबु स्पीकर माने जिबे सबु स्टेट रो स्पीकर माने आसीबे से जो हमर स्टेट रो जो स्पीकर मानकर जो मीटिंग हबो तो सेटा को डिसाइड करबे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में एतला हमर पार्लियामेंटरी हमर वर्ल्ड पार्लियामेंटरी फोरम रे जते इंडिया को रिप्रेजेंट करिवार अछि तो सीए भी करिवे ओके तो एडा हमर तमे मन रखिबो P20 का चेयरमैन के थे G20 रो जेमती चेयरमैन हमें कहले हमरो लास्ट टाइम इंडिया रे होतला G20 रो हमें सेमती P20 थिला से P20 रो चेयरमैन के थिले हां इंडिया रो P20 माने कोन जानछो सबु जो 20 टा का कंट्री रहला तार पार्लियामेंट रो हेड माने आसीबे तो जेहेतु इंडिया रे हमरो जो पार्लियामेंट रो लीड करूथिले ओम बिल्ला तो P20 रो एटा लीड करथिले किए ना हमरो ओम बिल्ला तेनु मन रखिबा G20 जगह जदी P20 पडिला P20 होची ओम बिल्ला लीड करथिले ओके कौन हबो श्रीजय मनोरंजन अश्विनी लिप्सा सागरिका समस्त आंसर बोथ सी ओके तेनु हमें कहले गवर्नर हुंतु कि प्रेसिडेंट हुंतु हमरो आफ्टर जनरल इलेक्शन जो फर्स्ट मीटिंग टा हुए सेटा को एड्रेस करन किए प्रेसिडेंट स्टेट रे हमरो गवर्नर करन ओके एंड तमरो इवन इफ बजट सेशन जते स्टार्ट हुए तो फर्स्ट बजट सेशन स्टार्ट हवा पूर्व की स्पीच देबे प्रेसिडेंट ओके तो गवर्नर सिमिलरली स्टेट रे so state governor make a customary address to the member of the house at commencement of the first session of the year ठीक अछि एटा सेकंड होची हमरो when state legislature does not have a rule on a particular matter आइड फॉलो लोकसभा रे रूल जहा अछि सेटा को फॉलो करिवो जदी हमर स्टेट पई से बलिया किछि नाही ओके सो 2000 हमर आर्टिकल हमें कोन कहले 208 रे हमर कोन हला ना ए हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर स्टेट लेजिस्लेचर हमर रहिला मे मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग द सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ से निजे रूल करिबो टू स्मूथली कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस until the rule are made under clause 1 the rules procedure and the standing order in force immediately before commencement kintu jodi gote state re having a legislative council of the governor after consulting with the speaker एटा हमें ए सब केस ओडा कहिले किंतु when last statement होची when state legislature does not have any rule on a particular subject तो सेही केस रे से लोकसभा रा जहा रूल्स रेगुलेशन अछि सेही अनुसार सेटा तार प्रोसीजर अनुसार निजे
बिजनेस ऑफ द हाउस को कंडक्ट कर तापर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हमें पढ़ेगा local self government can be best explained as kono democratic decentralization. Okay, so who is known as the father of the local self government in India? Lord Ripon. Lord Ripon हमरो 1881 रे हमरो फर्स्ट टाइम पे हमें कहले लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेके आसीथिले. ओके, तो local self government or democratic decentralization or democracy at the grassroots level बोली हमें कहूचे. ओके, तो ए जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कथा कहूचे को कमिटी रो रिकमेंडेशन रे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आस्थिला बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 रे जो कमिटी आसीबो बलवंत राय मेहता कमिटी ए बलवंत राय मेहता कमिटी गोटे 3 टायर गवर्नमेंट रो कथा कहिथिबो. ओके, 3 टायर गवर्नमेंट माने कोन ना ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद. तो सेही कमिटी रो रिकमेंडेशन पारे तमे जानि त एनडीसी को एटा रिकमेंडेशन जिवो अन पारे गोटे 3 टायर गवर्नमेंट पाई गवर्नमेंट कहिबो गोटे 3 टायर गवर्नमेंट करिवा पाई किंतु इट इज नॉट अप टू द स्टेट से को भले हमर गवर्नमेंट चाहउछन. गवर्नमेंट गोटे लोकल गवर्नमेंट हो 3 टायर हबो कि 2 टायर हबो कि 4 टायर हबो इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट. तो सेही अनुसार फास्ट हमर लोकल गवर्नमेंट कोडी स्टार्ट हला राजस्थान रो नागौर. ओके, राजस्थान रो नागौर रे. ओके, केबे स्टार्ट हला 19. ओके, तो जवाहरलाल नेहरू हमर इनागुरेट कले जेहेतु 2 अक्टोबर गांधी जयंती और गांधी चाहूले सब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत कथा. तो सेति पई गांधी जयंती रे हमर कोन करा गला ना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत स्टार्ट हला 2 अक्टोबर 1959 रे. सेकंड को स्टेट रे सेकंड कोडी होतला आंध्र प्रदेश रे. ओके, आंध्र प्रदेश रे हमरो सेकंड हेतला. तो ओपीएससी रे पढ़ीथिला को कमिटी रिकमेंडेशन देइथिला जे पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दवा. शुभश्री अशोक मेहता एलएम सिंघवी. ओके, अशोक और एलएम सिंघवी भितर हमरो कंफ्यूजन. आंसर होची तमरो अशोक मेहता कमिटी मन रखिबो. अशोक मेहता कमिटी हमरा ओपीएससी प्रिलिमिनरी पढ़ीथिला को कमिटी हमरा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दबा पई हमरा कोआ जेतला से 14 नंबर पॉइंट देखो अशोक मेहता रो. ओके, सेइथे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस. तेनु हमरा होची कोन ना अशोक मेहता कमिटी ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कथा हमरा कहिला. ओके, तापर हमें कहले जे आकु कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे दिया जिवो ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रे. 92 रे को गवर्नमेंट समय रे कि हमरा थिले प्राइम मिनिस्टर पीएम नरसिंह राव थिले. ओके, पीवी नरसिंह राव आउ एही वर्ष तांको नोबेल प्राइज जो नोबेल को जे कोन भारत रत्न ने दिया जाई छी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया. तो सेति पई तुमको पचरा जिबा जे तांका समय कंट्रीब्यूशन कोन एलपीजी हमें कहूचे रिफॉर्म जो हेतिला तांका समय हेतिला. देन हमर पंचायत राज रो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तांका समय हेतिला. ओके, तेनु मन रखिबा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. तो आ पई हमर गोटे सेपरेट पार्ट रहला. पार्ट केते शेड्यूल 11. ओके, शेड्यूल 11 पार्ट 9 आर्टिकल 243 ରୁ 243 ओ केतडा फंक्शनल आइटम रहला 29 टा फंक्शनल आइटम रहला. ओके, आउ एई थिरो तमरो कंपलसरी प्रोविजन हेउची कोन ना 1/3 रिजर्वेशन दिया जिवो वुमेन मानक पई. तापरे हमें कहले जे ग्राम सभा गोटे रहबो. ग्राम सभा रे को माने पार्टिसिपेट करिवे पर्टिकुलरली से ग्राम पंचायत को बिलोंग करूथिबे आउ वोटर लिस्ट से मानकर ना.
So only those people who are registered in the voter list and belongs to that particular gram panchayat, they can participate in the gram sabha. Okay. Then आमे कहले जे गोटे 3-tier government रहिबो यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडिया हमर गोटे यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर 3-tier government रहिबो ग्राम पंचायत रे आमे कहले विलेज लेवल रे ग्राम पंचायत तापरे इंटरमीडिएट और ब्लॉक एंड जिला परिषद तम क्वेश्चन ओपीएससी रे पडिथिला जे मिडिल लेवल रे जो गवर्नमेंट ता हमर कोन थिला ब्लॉक लेवल और इंटरमीडिएट हम ओके ग्राम सभा गला 3-tier गवर्नमेंट गला 1/3 रिजर्वेशन टू वुमेन मन को 1/3 रिजर्वेशन करा गला एमान कर इलेक्शन के करे स्टेट इलेक्शन कमीशन करे ओके स्टेट इलेक्शन कमीशन को की अपॉइंटमेंट दियंते स्टेट इलेक्शन कमीशन को की अपॉइंटमेंट दियंते गवर्नर अपॉइंटमेंट दियंते ओके स्टेट इलेक्शन कमीशन को गवर्नर अपॉइंटमेंट दियंती रिमूव किए करंती प्रेसिडेंट 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 केमिति रिमूव करंती तांको रिमूव से केमिति रिमूव होंती क्राइटेरिया कोन रिमूव रो जज ऑफ हाई कोर्ट रा जज जेमति बाहरिबे ता हाई कोर्ट रा जज केमिति बाहरिबे जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट रा जज केमिति बाहरिबे प्रूव्ड मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है कि स्पेशल मेजॉरिटी रे बोथ हाउस रे पास हला पर पार्लियामेंट रे प्रेसिडेंट तांको रिमूव करंती तेनु मन रखिबो जदिबासी हमर गवर्नर अपॉइंटमेंट दोउचंती किंतु रिमूव करूचंती किए प्रेसिडेंट लाइक ए जज ऑफ हाई कोर्ट रा जेमति जज हमर बाहर ओके तो तापर हमें कहले फाइनेंस कमीशन स्टेट फाइनेंस कमीशन जो रहला तांको अपॉइंटमेंट के गवर्नर तांक कार्यकाल केते वर्ष 5 वर्ष देवव्रत नॉट मेंशन वेरी गुड एटा कोडी मेंशन नाही केते वर्ष ताकर मेंशन नाही ओके तो आज पार्लियामेंट डिटरमाइन करिवो और प्रेसिडेंट डिटरमाइन करिवे कि केते टाइम पीरियड एमान रहिबे एंगर मेजर काम कोन हमर जो फाइनेंस कमीशन रो ना में कहले जे जेति कि नेट टैक्स कलेक्शन हला कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ओडिशा कि बामे स्टेट रे तो नेट टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन नेट टैक्स रो प्रोसीड रो सर्टेन पर्सन हमर को ग्राम पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को केते दिया जिवो तो सेइटा से रिकमेंडेशन करिवे ओके तो तापर हमें कोन कहले एई गुडा कहूचे हमरा कंपलसरी प्रोविजन जोडा का हमरा पंचायत राज पेशा एक्ट केबे आस्थिला 1996 रे ओके हमर पेशा एक्ट को एरिया को लागू है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया त हमर केतडा स्टेट रे पेशा एक्ट लागू होची 10टा स्टेट परीक्षा रे ओपीएससी रे दिथार पडिचे क्वेश्चन 10टा स्टेट रे ओडिशा सेथिरे अछि ना नाही ओके तनो एडा मन रखिबो नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली 2 ओके तेनु एथिरे कोन देखिया फर्स्ट स्टेटमेंट हमरा कोन होची करेक्ट अछि त हमरा गोटे एरिया टा शेड्यूल एरिया नाही इंडिया रे की हमरा एटा डिक्लेयर करंती
president. Okay, so as per the Indian Constitution, Part C, 5th schedule amar lekha hai. The expression schedule area means such area as president may by order declare to be schedule area. तो को area उड़ा schedule area तो president एटा को declare करेंगे. Second, statement 2 is correct. कहीं की the largest administrative unit forming the schedule area has been the district. Lowest हमारा होची कौन ना cluster of village in a block. Okay. Third statement हमारा correct ने यही थी भाई जे governor of the state has the special responsibility regarding such schedule area. He has to submit a report to the president regarding administration. एटा जो हमरा कोहा जायछि जे सीएम करिवे हमरा जो होम मिनिस्टर को सेटा रॉन्ग. एटा जनरली किए करंती गवर्नर ऑफ ए स्टेट एटा करंती तांकर स्पेशल रिस्पांसिबिलिटी रिगार्डिंग हमरा शेड्यूल एरिया और सीए रिपोर्ट का प्रेसिडेंट को देबे रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच एरिया. ओके, तो सेति पई ए जो स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट हमरा रॉन्ग अछि. Okay, so next question. Which one of the following suggests that the governor should be an eminent person from outside of the state and should be dealt as a figure without intense political links and should not have taken part in the politics in recent past? Sarkaria Commission. Okay. And I thara OPSC main रे भी क्वेश्चन टा पड़ितला हमरा सरकारिया कमीशन जो ऊपर हमरा गोटे क्वेश्चन पड़तला कि व्हाट आर द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन. एटा गोटे इंपोर्टेंट रिकमेंडेशन जे हमरा गवर्नर हेबे ही शुड बी आउटसाइड ऑफ द स्टेट हेतिबे एंड तांकर सी एक्टिव पॉलिटिक्स रे नथे. ओके, तो एटा त हमरा बे रूल्स मना जाउची जेमिति कि ओडिसा रा जे गवर्नर हेबे सी हमरा झारखंड रो छत्तीसगढ़ झारखंड रो हमरा असंदी. रघुवर दास हमरा कोठ हरथिले झारखंड रो. ओके, सिमिलरली हमरा ओडिसा रा हमें कहबा विश्वभूषण हरिचंदन एबे कोठ हर अछंती छत्तीसगढ़ रे बे हमरा अछंती गवर्नर. ओके, आसाम रे थिले छत्तीसगढ़ रे बे अछंती. तेनु जने जे जो स्टेट रे गवर्नर हुअंती ही इज नॉट बिलोंग टू द सेम स्टेट रे गवर्नर माने सेम स्टेट को बिलोंग करनो थिबे आउ तांकर एक्टिव पॉलिटिक्स रु से इन्वॉल्व नथि. ए स्टेटमेंट ला रखा है बट इट इज नॉट ट्रू. जे गवर्नर हुअंती से वेरी एक्टिव पॉलिटिकल पर्सन है. तुम भाव रघुवर दास जे चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड थिले तमे कहबो न्यूट्रल पर्सन एटा तो हेई परियोनी. एबे न्यूज रे कोन काली ना कोन न्यूज रे तांका पुओ काहू बाडे दैछन तांका मन पुलिस को. ओके, ये जाइथिले पूरी आ तांका पुओ कोन हमरो ओटे न्यूज रे आसला. ओके ओके, तो आमर होची तो एटा कोन ना सरकारिया कमीशन रे रिकमेंडेशन. तो सरकारिया कमीशन रे रिकमेंडेशन रे कोन कोन रिकमेंडेशन ये देइथिले ना गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन नॉट बिलोंग टू द स्टेट वेयर ही इज पोस्टेड. तो ओडिसा रे पोस्टेड माने ओडिसा रे लोक होई नथिबे. स्टेट चीफ मिनिस्टर शुड have a say in appointment of the governor. गवर्नर जो अपॉइंटमेंट रे हमर कोन होची चीफ मिनिस्टर कर भी हमर तांको पचरा जाए. ओके, जणे दिया जाए पचरा जाए माने कोन से मना कर देले अपॉइंटमेंट देबेन ना कोन कुआ जीव जे ए तम स्टेट रो चीफ मिनिस्टर होचंदी ए जो गवर्नर होचंदी. गवर्नर शुड बी ए detached figure without intense political links and should not have a taken part in the politics in recent past. तो एटा त हमरो जमा लागू नहीं. ए गवर्नर शुड हैव नॉट बी ए मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी. सेडे भी हमरो माने रिकमेंडेशन गुडा का दिया जाइथिला. ओके, आउ कोन ना गवर्नर मस्ट नॉट रिमूव बिफोर कंप्लीशन ऑफ देयर 5 years tenure and except in the rare case. किंतु होउनी जे 5 वर्ष तांकर सिक्युरिटी ऑफ टेन्योर नाही. तो जदि गवर्नर को प्रेसिडेंट जो समय चाहिए बाहर करि परिबे गोटे जगह आ गोटे जगह को ट्रांसफर भी करि परिबे. एमाने रिकमेंडेशन देइथिले कि तांको 5 वर्ष जाय तांको फिक्स टेन्योर दबा कथा सिक्युरिटी ऑफ टेन्योर दबा कथा किंतु सेटा हमरो इंप्लीमेंट हेलानी. कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस on appointment of the chief minister during a hung assembly, leader of majority parties should take the vote of confidence in the assembly within 30 days of his appointment as CM. So
as long as the council minister possess a majority in the assembly, the governor cannot use his discretionary power. तो आपको नहीं कि हमारा सरकारिया कमीशन अमेंडमेंट को नहीं कि हमारा क्वेश्चन पड़ितला हमें जो जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू पावर अछि ना नहीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन करि परिबनी तमे जदी गोटे अमेंडमेंट करूछ कॉन्स्टिट्यूशन से तो चेक करिवो तार काम वाला प्रथम काम वाला चेक करिवो वेदर एटा कॉन्स्टिट्यूशन को हमर वायोलेशन करूछि ना नहीं जदी वायोलेशन करूथबो ताले एटा नॉल एंड भॉइड कर दबो ओके सेकंड स्टेटमेंट हमर रॉन्ग अछि नो हाई कोर्ट्स हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर हमर ए सेंट्रल लॉ टू इनकॉन्स्टिट्यूशनल तो एटा भी हमर रॉन्ग अछि त कोनो ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रे एटा कुआ जाइतला इंसर्ट कराइतला जोथे कुआ जाइतला जे हमर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट रो जो पावर जुडिशियल रिव्यू पावर टा को हटे दिया जाय तो इधर नो हाई कोर्ट शैल बी हैव द जुरिडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी constitutionally invalid 43rd amendment act 1976 रे सेटा को रिस्टोर कर दिया जायଥିଲା 42nd रे हमर सेटा को हटे दिया जायଥିଲା किंतु 44 रे हमर सेटा को पुनी रिस्टोर कर दिया आ केशवानंद भारती केस रे हमर सुप्रीम कोर्ट कहिबो जो बेसिक स्ट्रक्चर कथा जदी कोनोसी अमेंडमेंट तमे कॉन्स्टिट्यूशन ने करूछ ताहाले एथिरे कोन होची ना सेटा हमर चेक करिबो हमर सुप्रीम कोर्ट तो ता जुडिशियल रिव्यू पावर अछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन So B is your correct answer. 44 amendment of the constitution introduced an article placing the election of the prime minister beyond judicial review. Okay, तो एटा हमरा कोन होची ना wrong अछि the parliament passed 39th amendment constitutional amendment act which removed the authority of the supreme court to adjudicate the petition regarding the election of the president, vice president, prime minister, speaker of Lok Sabha. Instead, a body constituted by parliament would be vested with power to resolve such. Into the amendment also made to Representation of the People Act 1951 and 74 placed 9th schedule among the election amendment. Hence, statement 1 is incorrect. In second statement, the Supreme Court of India struck down 99 Constitutional Amendment Act as it is violative of independence of judiciary. এটা ঠিক থিলা ওকে আমরা এনজেসি অ্যাক্ট কো কাহি কে আমি স্ট্রক ডাউন কলে যে কোয়া দিব যে এটা আমরা जो बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेशन करछि को बेसिक स्ट्रक्चर ना इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी केमिति वायोलेशन करछि ना हमें कहले एनजेएससी रे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी रे जो मेंबर रहिबे फ्यू मेंबर जोटा कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट द्वारा हबो तो जदि गवर्नमेंट रो इन्वॉल्वमेंट एथे रहिबो तो से माने कहबे मे बी गवर्नमेंट विल पुट देयर फेवरेट कैंडिडेट तो सेथिरे हमरो से जुडिशियल प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करिवार चांस अछि तो जुडिशियल रो इंडिपेंडेंस ता डाइल्यूट हबार चांस अछि सेति पे इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशियरी हार्म हबो बोली 99 अमेंडमेंट एक्ट केबे आसला 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014 रे एटा को नॉल एंड भॉइड कर दिया
Okay, in which the constitutional amendment widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of fundamental rights. Okay, तो हमरा कितना नंबर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट रे हमें कहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट रे जते बेले हमरो लैंड रिफॉर्म करा जेबो जते बेले फंडामेंटल राइट हमरो जोटा कि राइट टू प्रॉपर्टी वायोलेशन हेले भी तार जुडिशियल रिव्यू हे परिबो नै एटा हमरो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 रे जो जमींदारी सिस्टम और लैंड रिफॉर्म को आ भितर कोउटा 26 जनवरी रे थिला सोशलिस्ट सेकुलर आउ इंटीग्रिटी ए तीनटा का वर्ड केबे ऐड हला ओके 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रे तडा जनवरी 50 बेल कोई सेकुलर नथिला कि सोशलिस्टिक नथिला किंतु सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला त आंसर कोन हबो बी हबो ओके त सोशलिस्ट सेकुलर ए दीटा का हमरा ऐड हबो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 19 आउटा भी हमरा ऐड हेतबो एसएसआई कहितले इंटीग्रिटी भी हमरा ऐड हेतबो ओके एटा भी हमरा ऐड हेतबो एसएसआई हमें कहितले तेनु आंसर बी हेतबो सी ओके तो आंसर कोन बताले सी is the correct answer. Constitution Day is celebrated in 26 November every year to promote constitutional value. 26 November 1949, Constituent Assembly set up a drafting committee. Drafting committee के भेजला 22 अगस्त 1947 ना कौन थिला एटा 29 अगस्त 1947 सर हां 29 अगस्त 1947 ठीक अछि अब 29 अगस्त ओके So Constitution Day, also known as Samvidhan Divas, is celebrated in our country. Samvidhan Divas मन रखिबो Constitution एटा भी परीक्षा रे OPSC रे पढितला मन रखिबो 26 November. So every year to commemorate the adoption of the Constitution, so Ministry of Social Justice and Empowerment on 19 November 2015 notified the decision of the government of India and celebrate 26 November as the Constitution Day. To promote constitutional value. Second, all the committee of the Constituent Assembly, most of important amar jo drafting committee thila, ta seita amara kebe establish habo August 29, 1947. ei committee ro amara chairman thibe ki ame kale B.R. Ambedkar thile. Okay, and it was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of new constitution. और 26 नवंबर 1949 रे ए कॉन्स्टिट्यूशन को हमरा अडॉप्टेड हेत ओके तो हमरा सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग अछि फर्स्ट स्टेटमेंट हमरा ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो इलेक्शन कमिशन हमें कितने नंबर बॉडी हमें कहले कितने जण अछन एथे तो 5 मेंबर बॉडी नु एटा होची कोन ना 3 मेंबर बॉडी तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल फॉर कंडक्ट बोथ जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन तो होम अफेयर्स यदि करिबो ताल इलेक्शन कमिशन रा काम कोन ओके तो जहा इलेक्शन कमिशन कार हमरा इलेक्शन करूची
ना प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट एमएल एमपी मानकर करूची आर्टिकल 324 तमे जानिछ अपॉइंटमेंट यांकु किए दउछन्ती प्रेसिडेंट कार्यकाल केते वर्ष 6 और 65 ओके तो मेजर काम हला अंकर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करबी ये ही हमरा इलेक्शन करंती तो एटा भी रॉन्ग अछि फर्स्ट भी एटा 3 मेंबर बॉडी so election commission resolve the dispute relating to the split and merger तेनु 1 and 2 तमे एलिमिनेट करि देले आंसर तमर कोन ना थर्ड बाहर जाछ ओके election commission resolve the dispute relating to the split and merger of the political party आ भीतर कोडा हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी so only one national commission for backward class कित नंबर आर्टिकल में पहले 338 बी कहितले ओके सो 338 हमें कहितले कोन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338 ए कहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब और 300 ए 338 बी होची नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास तो एटा ही हमर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अन्य गुडा को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं ओके ओके ठीक अछि तो हमें मेजर जिनसे तो डिस्कशन कले और जोड़ा अच्छी हमारे सिटीजनशिप एगुड़ा का हमें इलेक्शन को लेके क्वेश्चन के तौर अच्छे इलेक्शन क्वेश्चन केतरा करबा जेहेतु इलेक्शन हेछि तो केतरा क्वेश्चन हमें करबा केतरा क्वेश्चन पड़ी छे तो डेटा पड़ी छे गोटे फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा ए नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड any citizen whose name appear in the electoral roll of the constituency हमरा वोटर लिस्ट ना उठिदिबा दरकार आ लोकसभा नॉमिनेशन फाइल करिया कहले तम केते वर्ष दरकार मिनिमम 25 वर्ष राज्यसभा 30 वर्ष आ लोकल 21 वर्ष हमें यदि प्रेसिडेंट हबा चाहौ 35 वाइस प्रेसिडेंट 35 गवर्नर केते वर्ष तम दरकार 35 ओके सो गवर्नर हुआ प्रेसिडेंट हुआ वाइस प्रेसिडेंट हुआ 35 ओके एंड तमरो हमें कहले जे एमएलए किंबा एमपी हुआ विधानसभा किंबा लोकसभा 25 वर्ष राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल केते दरकार स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल मिनिमम एज केते 30 years okay 30 years तमरा minimum age दरकार so qualification to lok sabha must be a citizen of india not less than 25 years and must be registered as a elector of the parliamentary constituency कौन होगा आंसर आ रहा ओके तो कौन हम बेटा हमरो D is the correct answer in the election of the Lok Sabha or state assembly the winning candidate must get at least 50% of the vote no दरा 3-4 जन ठिया हिचंदी तो सही केस रे पॉसिबल त नहे हमें इवन 35% रखले भी जीति जाउ छ ओके तो तुमको मिनिमम 50% वोट जे पाइबा निहाती दरकार सेटा नहे The second is according to the provision laid down in the Constitution of India, the Lok Sabha
the speaker post goes to the majority party and deputy speaker goes to opposition. एमिति भी रूल ना ओके इवन इफ तमे आगुरु देखिछ जे नरेंद्र मोदी का फर्स्ट टर्म रे डेप्यूटी स्पीकर दिया जायतिला हमरो नॉट ऑपोजिशन पार्टी को हमरो एआईडीएमके रो थंबी दुराई को दिया जायतिला से तो ऑपोजिशन पार्टी सेतबे ऑपोजिशन पार्टी केही नथिले ऑपोजिशन पार्टी आ पे हमु केते सीट दरकार 110 तमर दरकार मिनिमम तमर 55 जन मेंबर दरकार ओके तो सेतबे 55 कहार नथिला कांग्रेस रो 49 ना 44 टा केतरा थिला तो सेति पई एको दिया गला ओके ठीक अछि तो ऑलमोस्ट हमें मेजर जिंस हमें देखिले तो आउ जहा हला गोटे क्लास हमें करिबा एंड पार्लियामेंट चैप्टर किछि रहि जेतला सेटा करिबा देन हमें अलगा कोटा एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट इकोनॉमी आर कुछ ओके इकोनॉमी करिबा यस इकोनॉमी साइंस एंड टेक पढाबो ओके साइंस एंड टेक ज्योति सर पढेबे से कहिथिले हम पछैतो आ ज्योग्राफी हां करंट अफेयर करिबा ओके करंट अफेयर करिबा तेणु करंट अफेयर जेति के हमरा दिया जाउची मॉक टेस्ट रे तमे सेति की प्रैक्टिस करो डेफिनेटली सबुदक मेजर क्वेश्चन सेतरे इवन इफ यूपीएससी रे जो करंट अफेयर्स रो क्वेश्चन पड़ी छि प्राय सब सेतरे कवर होथिला ओके तेणु हमरो एमिति किछि इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स नाही जोटा कि मु मॉक टेस्ट रे कवर कर नथिबे या नै तो डेफिनेटली मु सेतरे कवर करनी तमे जदी मॉक टेस्ट कवर करि दउछ ताल तमरो करंट अफेयर्स सेइथरे ही हो ओके एंड लास्ट मु बाछि कि हमरो मॉक टेस्ट जते करंट अफेयर्स अछि तो ताकू कंपाइल करी कि गोटे 400 500 टोटल जो करंट अफेयर्स सेति की ही दिया जिवो ता सेति की पढी के जिवो तारे भितर ही सब वर्ष पढे ओके ठीक अछि थैंक यू एवरीवन हेलो सर आया मॉक टेस्ट जो स्टडी मटेरियल रे सेटा अपलोड है नि सर टोटल 12 टा ना केतेटा अछि हम मु करि दउ छी सर ओके सर प्रोटेम स्पीकर ऑपोजिशन रे रहिबे ना मेजॉरिटी पार्टी रे रहि परिबे तो सेइथरे सीनियर मोस्ट एथर त माने कंट्रोवर्सी हे जे एथर त रूलिंग पार्टी रो स्पीकर प्रोटेम को देथिले जेमति कि भर्तुरी महताब से तो रूलिंग पार्टी रो अछंते तो वन ऑफ द ओल्डर मेंबर हितरा दरकार किंतु से भी ओल्डर नथले सीनियर मोस्ट तांको टू भी सीनियर मोस्ट थिले तो सेमति किछि नाही हमरा वर्तमान रूल्स ऑफ रेगुलेशन सेतरे किछि हेंती नाही कि जनरली हमरा कोन हुए पार्लियामेंटरी कन्वेंशन रे सीनियर मोस्ट जज जो सीनियर मोस्ट मेंबर आउ ऑपोजिशन वाला को दियंती किंतु एथरा से जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करा जाए किंतु स्टेट रे तो ऑपोजिशन को